Hello, hello. We are getting started. I'm gonna be back from the bathroom because gotta start soon. This stream is gonna be not ending until I get my work done. It's gonna go throughout the day, but right now, just pause for a minute. Okay, hello guys. How are we doing? Let me just fix up some lighting and we'll get started. It is I, the being of pure mental issues. It is I, HXXHIM. Today, my beautiful viewers, we are going to be studying chemistry's mental ATP. Woo, yeah, let's go, Hashi. Woo, yeah. Well, let's not gonna waste any more time and we are gonna start. Let's start with what's there to study. I have a list of topics ready for me because I'm a prepared man. Thank you very much.
chemistry ATP is 20% weightage, and it consists of four questions having 40 marks, for which you will have be given 1 hour. So what did I just say? Basically, there are three paper in chemistry. This is the third one, which is ATP, also known as P6. We have 1 hour to attempt this paper and 40 marks. Question will be based on experimental skills in section 4. This is externally assessed, and the five main topics are experimental chemistry, acid bases and salts, moles and stoichiometry, rate of reaction, and electrolysis. Absolute cinema topics. These are my favorite topics, not gonna lie. So I don't know what's gonna do. Okay, so question one is usually experimental chemistry or salts. Question two is the rate of reaction or moles. Question three has always been test of cations and anions. And the fourth question is the designing question, which is probably the hardest one of them all. I kinda hate the designing question, not gonna lie, but there's nothing we can do about it. Let's go through a worksheet which I have solved, but we're gonna cover it up. The apparatus shows was used to investigate the products formed when ethanol C2H5H8 was burned. This is the diagram. What is this? I'm guessing a beaker because it's written. Okay, besides from that, explain why water collects. Explain why water collects in the U-tube. The U-tube. Can I get a picture of this? Pretty. I'm gonna just show it up. Hold on, guys. Hello, guys. Loki. I don't know how we're about to study for this one, but we're gonna do it. We're gonna do it anyways. Hold on. It is opening. Where's the Word document? Bruh, it's the marking scheme though. Hold on, guys. This is a BS happening right now. Very big bull crap. Yeah, so yeah, this is how it's gonna work. Don't have 6 7 subs. Okay, let me change that up. We have actually 77 subs. And for our video capturing, let's capture something else. Hold on. Let's go over to. Hold on. Please chat. Hold on, please. Yeah, just 1 second. Yeah. So, can you guys see it? Yeah, you can. Alright, let me just start soon. Let me zoom in. Explain why water collects in the U-tube. Why does water collect in the U-tube? Well, the combustion of ethanol water produces with this form of steam wave. I don't know what I wrote. Let's check the marking scheme with it so we don't have any guesswork. Yeah. So according to the marking scheme, the steam turns the steam. Oh my god, cannot open it. I think I have a separate copy of it too. Yeah, I'll just use it. Yeah. So basically, this why does water collect in this U-tube? So basically, steam slash water vapor condenses, cools, and that's about it. Steam condenses over here. Steam condenses, and water vapor cools down. Explain why water collects in the U-tube, because the steam basically kind of the steam vapors become vapors. They are condensed and they fall here. State a chemical test of water. We have studied this before. There are two tests of water using copper sulfate or cobalt chloride, and
I wrote copper anhydrous copper sulfate turns blue to pink. Turns blue. Yeah, hold on. I made a mistake here. Anhydrous copper sulfate is white in color originally, so when we add it into water, it becomes blue in color. And for cobalt chloride, it is blue in color and it turns pink. Next question. What is the purpose of a suction pump? Where is the suction pump over here? I'm gonna guess to let the gases out. It says to suck gases. Products through the app. What does it mean to suck the gases? What does it mean? What does it mean to suck gases? ATP chemistry. Damn. ATP is sucking gases referred to the process of drawing gas. So basically taking something out. So basically letting the gas out, but we should use the accurate words. We will use to let the gas suck out. Suction pump, as the name suggests, is literally in the question. Predict the change in the test tube containing a lime water. Explain your prediction. Lime water. So let's see. Combustion of ethanol. Combustion creates carbon dioxide and water. So the gas over here is most probably carbon dioxide. So the change would be that the lime water will turn milky. I'm gonna guess. Okay, the lime water turns milky, and why? Because carbon dioxide is present, which turns lime water milky. Question 2. A student did a single titration to find the concentration of a solution of dilute sulfuric acid. The student added 25.0 cm3 of aqueous sodium hydroxide NaOH in a conical flask, followed by a few drops of indicator. Dilute sulfuric acid was then added to the aqueous sodium hydroxide until the solution was neutral. The apparatus is shown in the diagram. So we have a pipette, a conical flask, a burette, and another conical flask. Name the boxes. Okay, so we will write over here pipette. Uh, oh my god, I've never used this mouse before, bro. Like, holy writing. Well, pipette, and this is gonna be burette. And let's see what the marking scheme says. The marking scheme says pipette and burette. Complete the boxes to name the apparatus. Name a suitable indicator to use in titration to give the color change. We've studied that in titration we should use methyl orange. It will be methyl orange. The color change would be because first we added it into aqueous sodium hydroxide. So aqueous sodium hydroxide would then be in methyl orange is yellow in color in sodium hydroxide because it's a base, and it will change from yellow to orange. So white to orange, and the marking scheme says yellow to orange. What reading should the student take when doing this single? What reading should the student take when doing this single titration? The initial burette reading, I believe, and the final burette readings. After titration, after titration, the student discards. My favorite study streamer Hashim signed my bag. Hi lol, can you say my name, Hashim? Okay, guys, we have my best viewer Shian Hashmi on chat. Guys, support him. He's a lovely dude, and he's here studying with us. Shian, just to let you know, I did not have chat up. I'm sorry, I couldn't read your messages. But hold on. Let me fix up chat for you, man. Let me do it for you. Let's open a new type of chat. I forgot how to do this. It's been so long, okay? So let's see if I. Oh, whoa. No, 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 no. I don't know. Guys, help me. Guys, help me. I don't know what to do. I did not want it onion rings. I wanted fries. My screen actually just got stuck. Wow. Chat is disabled for live stream. Bro, my bruh, bruh. I don't even know what's happening. Uh
Guys, help me. Yes, I'm gonna close it. Dude, that was close. That was close. We almost messed everything up. Let's fix it up. Eat it up. Eat it up. Settings. Settings. Happy. Migrate. Hold on. I'm gonna just like close this. Yeah, I'm gonna close that. And I'm gonna make a new widget. I'm gonna name it chat. And we're gonna add the URL. Hold on. It's okay, Hashim. I still love you. I love you too, man. You don't gotta mention it. I'm gonna take this link, paste it here, and allow interactions. Sure. Okie dokie. Interactable chat. Oh, did I just close it? Oh, I did. Interactable chat. Nothing to see here. Okay. Let's go over here and let's put the chat over here. Close this. I don't want the boundaries. Can I not like fix that? Well, oh, that works. Okay, let's get back to it. Well, I gotta revert a lot of changes. I don't know what I was doing here. Why to orange? Okay, what reading should be taken? The initial and final beer reading. What time it is? I only got like 10 minutes for you guys, okay? So do not be bad people and put me here forever. After the titration, student discarded the content of the conical flask and rinsed the conical flask with distilled water. Suggestion: explain what would be the effect, if any, on the titration effect values if the conical flask was not dried after repeating the titration. What would be affected? The final and initial bureau reading, I think. Value should be same mole. What the hell? Hmm. There isn't much over here. I think the answer for this one is what reading should we take? I let me see what I wrote. So I wrote volume of acid before color change and volume of acid after color change. I should have checked. And for the second one, water vapors would add to the volume of sodium hydroxide and complete reaction will not occur as some NaOH might remain. Yo, Shan, what's good? Yep. Okay. Question number 3. The diagram shows the apparatus the student used to prepare whatever the hell that is. I don't think I can close it. Okay. Yep, perfect. The diagram shows the apparatus a student used to measure a dry sample of chlorine gas. Question number 3 is mostly a test of cations and anions. Chlorine is more denser than air. Okay, what is this? This is a conical flask, and yes, that is written. And this is an inverted gas jar, or just gas jar would also work. Complete the boxes. We did. Use the diagram to identify 2 mistakes the student made. Hmm. So let's see. According to the mark scheme, there is no bung in the second flower. There should be a bung like this, and the gas jar should not be inverted. Yes, because chlorine is denser. Chlorine is a dense gas, so chlorine, if it would go in here, it would basically sink down, which would not really trap it, let it go outside, and this bung would also not be efficient because chlorine is a gas and it would escape out. Simple. That these were the 2 mistakes the student made. So just one reason why the gas produced in flask 1 is passed through the concentrated sulfuric acid, because sulfuric acid basically takes away the moisture of gases,
I believe that is the answer. To dry the gas, to remove the water. Remove the water. To remove the water. I wish I could type in here, you know. It's kind of a drag to do this. Hold on, if I were to down without your changes, I think it's the same thing. No point in doing this. So just why? Okay, describe a test for chlorine. So the big mistake students and I would probably make is thinking of chloride ion. When the examiners tells us that we need to use chlorine, then we will go for the chlorine uh, atom, anion. Sorry, chloride is a gas basically, and we will not. We will not. Oh my God, I am sorry. Chloride is the anion, and chlorine is the gas. So this is a lot of mess. A test for chlorine would be, since it's an anion, the test of chlorine that we have studied is acidify with dilute nitric acid, then add acidify silver nitrate. Acidify with dilute nitric acid, then add aqueous silver nitrate. So let's see, chlorine gas. We will acidify with dilute nitric acid, dilute NO3 inside chlorine. Let's close it up too so it doesn't escape. The gas is over here, chlorine acidify with dilute nitric acid, and then we will also add aqueous silver nitrate. This would give us a, come on Sean, I want you to answer this one. When we add chlorine into, when we add a dilute nitric acid and acidify with dilute nitric acid and add silver nitrate, what color do we get? What is the observation? I'll wait for you to answer, bro. Anybody, you gotta answer. What will be the observation? Come on. It is really simple. Really simple. We have done this many times before, and like, you just have to check from the table. Let me show you the table so it is easier for you. Where do you think it is gonna be? I have no idea. No man, you gotta do something. You gotta think of something. Gotta think of something. I'll put it up for you. Is it green? No, no, it's not green. It's not green. It's right there, bro. It's right there. Look for chlorine. Look for chlorine. What is what is the color you get when you acidify with dilute nitric acid and add silver nitrate to it? It's right there, right in front of you. Did you see it? Shan, you got 3 seconds to answer. I'm gonna answer it otherwise. You got 3 seconds. Three, two, one. White precipitate. Everybody clap for this man, bro. He did it. Shan, you should feel really proud of yourself. You are above many people now who didn't answer. Yes, indeed, it is a white precipitate. This is how easy the ATP will be. We will just have to check from the sheet. And is it white PTP? It is white PTP. It is a white precipitate. So you will write a for question number 3, part D. The test says litmus turns white. Uh, by the way, you answered wrong. This was the mistake I was telling you about. Chlorine is different from chloride. Chlorine is a gas, and there's a different test of gases. I showed you the anion test on purpose because I knew you'd copy off of it. But you made an effort and you will learn from this. It was not white precipitate, Shan. It bleaches litmus paper
And the answer is bleach is damp litmus paper. Observation is white litmus paper is bleached. Don't do that on your exam. You're learning something here, okay? Suggest why the experiment is done in a fume cupboard. Sean, do you know what a fume cupboard is? Asking you, do you know what a fume cupboard is? Because when I was doing this for the first time, I had no idea what a fume cupboard was. It was until our sir taught us what a fume cupboard is, and I recommend you get a note of this one too. What is a fume cupboard? Hold on, let me check for myself. I have to check my chemistry. No, Hashim, I don't know what a fume cupboard is. Do not worry, Shian. I also didn't know what a fume cupboard was until Sir Talha taught me. Fume cupboard is something which is used to contain toxic gases and poisonous gases such as chlorine. I am about to leave. Okay. As you guys heard, I have to go on car and I can't go on bike because of the rain, and it won't go away and it won't come again another day. That's good. So, do you know what a fume cupboard is now? It's basically for poisonous or toxic gases. Poisonous or toxic gases are contained in it. Let me see if I can find a fume cupboard. Let me see if I can find a fume cupboard. Ventilated lavatory. I'll miss you, Hashim. I'll miss you too, man. So this is actually just what a fume cupboard looks like. Inside of it, we will store gases which are toxic. Chlorine is one of the toxic gases, and I'm pretty sure nitrogen dioxide is also up there. Nitrogen dioxide to be confirmed. Next question. Where is the worksheet at? Question number 4. It is a student dips the following does the following step to make zinc chloride crystals from solid zinc oxide. Shan, I am gonna leave pretty soon, so if you want, you can take a screenshot of this and yeah, take a screenshot of this and you can solve it yourself. And when I come back, you could help me with the answers. I'm gonna leave now. I had fun for now. We're gonna start this stream back at 6 till like 7:30 ish, and then I'll probably end the stream and we'll call it wraps. Most probably. Then the sub goal is at 77. Yeah. And well, Shian, I have a blast. I'm pretty sure you took the screenshot. We're gonna put it on the whatever starting stone stream. Shan, I'm having fun in the stream. Are you having fun? Probably not because we're studying and nobody wants to study. But hey, it's gonna be our last exam and we gotta work on it. Let's go.
Thank you, bro. I forgot about my mic. Okay, let's start. So HCl plus zinc oxide is zinc chloride plus H2O. Student is basically trying to make zinc chloride with crystals, which is zinc chloride is a soluble salt. We will warm the mixture and stir it. Continue to add zinc oxide to the beaker until all of the dilute HCl has reacted. So it's an access reaction to form a soluble. So we know it's gonna be a soluble. Uh, Two soluble reagents to form a soluble salt and water. Remove the excess zinc oxide, I am believing by filtration. Obtain crystals of zinc chloride from the solution. Name the apparatus used in step 1 to add zinc oxide. Zinc oxide is a metal, so a it will be a solid. Since zinc oxide is insoluble, soluble plus insoluble will make a soluble gas, and the insoluble reagent is zinc oxide. So for insoluble reagents in the access method, we will use a spatula to pour it in, and according to the marking scheme, it is a spatula. If you don't know what a spatula is, you need to get doing, bro. You don't go to the kitchen or something, you don't help your mothers and stuff. Like, this is a spatula. You have to have seen this in SpongeBob or something.
Remove the excess zinc chloride. Okay, so this is gonna be spatula. Warm the name the apparatus using step 1 to warm the mixture. I wrote Bunsen burner, and the marking scheme includes Bunsen burner. How did the student know that all of dilute HCl has reacted? Well, when all of the HCl would have been reacted, zinc oxide will be present in the bottom and it would be not reacting. And according to the marking scheme, a solid remains, zinc oxide will stop dissolving and reacting. What is meant by the term excess in step 3? Remove the excess zinc chloride, the unreacted zinc oxide basically, which is, yeah, basically in the marking scheme it says more than enough to react. Uh, how is the excess zinc removed in step 3? Filtration. Oh, and the marking scheme says that as well. Describe how crystals are obtained. Now, this is a general question. It's asking you to basically define what is crystallization. I wrote heat the solution to the point of crystallization, wash with distilled water, and dry in an oven. The marking scheme wrote heat slash evaporate solution to crystallize point until saturated, leave it to cool, heating slash warming not okay, that's about it. So you will point out 3 points in this 3-mark question. Heat the mixture, heat evaporate the mixture till the crystallization point or the saturation point, and then you will leave it to cool. It is not important to mention that you're going to heat it up afterwards, like drying the crystals. It's not important to. You just need to show how you get the crystals. It's also not important to write wash with distilled water. So basically, heat solution till the point of saturation, and then leave it to cool. That's your answer. Suggest how the method would differ if zinc carbonate was used instead of zinc oxide. Now, this question is something I struggled with. Basically, it's asking if zinc carbonate was used instead of zinc oxide. Here, if we used ZnCO3, what would be the difference? And according to the marking scheme, it says heating slash warming is not necessary. However, I do not understand this question at all. So I will use Claude AI to help us solve this question. So let me take a screenshot just for a second and I will ask it to solve this for us. Bruh. Let's see the answer and then we'll go forward. Also, just a note, we will also watch Sir Talha's stream on my Sir Talha's video afterwards. So stay tuned for that. If zinc carbonate is used instead of zinc oxide, the method would differ because when zinc carbonate reacts with hydrochloric acid, carbon dioxide gas is produced. Okay, we already know that. Whenever any acid reacts with a metal carbonate, it must liberate salt water and carbon dioxide. So the difference is that you would observe bubbling slash effervescence during the reaction due to CO2 released, whereas zinc oxide, there is no gas produced. Carbon dioxide gas would be produced effervescence. There is a key looking. The gas is being given and everything else in the medicine. The marking scheme says that heating slash warming will not. Marking scheme states that heating slash warming is not necessary in step 1. Explain. Don't mind my spelling. I know I'm not the best at it. The marking scheme, why heating not is used? The marking scheme is pointing out that zinc carbonate is more reactive than zinc carbonate, where zinc oxide is a solid that needs warming to speed up the reaction to reasonable rate. It's less reactive with acid. Zinc carbonate reacts with dilute readily at room temperature without needing any heat. So the difference in the step 1 heating warming would not be required. In short, the warming step 1 is only needed because zinc oxide is stubborn to react. Zinc carbonate is reactive enough and it does not need the extra energy to get going. So it was actually a simple question.
Let's do this electrolysis question. A chemist heated solid zinc chloride until it became molten. The apparatus shown was used to pass electricity through the molten zinc chloride. Now, using inert electrodes. Now, there are 2 points you need to understand. Molten zinc chloride is being used and inert electrodes. In the start, it says the chemist heated solid zinc chloride until it becomes molten. So, the ions we have are zinc, two positive ions, and chlorine negative ions, and we know that zinc positive ion will go to the negative terminal, which is the cathode, and the anion over here, chlorine, will go to the anode. So Cl negative will go towards the anode, anode, yes. A silver colored solid was formed at the negative electrode, cathode. Here, silver colored was formed. Name the process of breaking down substances. This process is called electrolysis. A Bunsen burner was used to heat zinc chloride. Describe a Bunsen burner is adjusted. I wrote bring it closer to the beaker to provide more heat or move it away from it. This was a not accepted answer, as the as this the marking scheme said open, air hole, or collar. I'm guessing the contact would be much stronger, which is why it would be able to adjust a very hot flame. Suggest and explain the expected observation at the positive electrode, which is the anode. Bubbles of greenish yellow gas. Fizzing slash bubble of green gas. So the my answer would be correct. The mistake people usually make is confuse chlorine with hydrogen. When they think of gas, they only think of colorless. So they end up writing bubbles of colorless gases, which is incorrect. It is bubbles of green gas or greenish yellow gas at the anode. Suggest why iron electrode cannot be used, because iron is a reactive metal and it would react with chlorine, and that's exactly the answer in the marking scheme. Uh, what difference would the chemist observe at the negative electrode, which is the cathode, where the cation tends to go, if aqueous zinc chloride was used? If aqueous zinc chloride would be used, we would not receive zinc anymore. We would get H positive ion of instead instead of zinc. And the explanation would be in the electrolysis of a aqueous compound, we will check the reactivity series, and according to the reactivity series, we have hydrogen, and below first of all, let's memorize the reactivity series. Please stop calling me a careless monkey. Please stop calling me a careless zebra. Instead, try learning how copper saves gold plates. So this is tin. I forgot its symbol. I think it's Pb. So here we see hydrogen is here and zinc is here. Hydrogen is lower in the series, so hydrogen will be present, and according to the marking scheme, it says hydrogen is below zinc in the reactivity series. When electricity is used to break down concentrated zinc chloride, chlorine is produced. Chlorine
Chlorine is the gas. The test of chlorine is add litmus paper. It will bleach damp litmus paper. It will be damp litmus paper white, and that is exactly the answer. The bottle of zinc chloride is labeled corrosive. State one safety precaution that should be taken. So, a classmate of mine wrote a lab coat. Okay, lab coat was not accepted as. However, the answer I wrote was keep it closed using a rubber bung. The marking scheme, however, has written wear gloves or goggles. Simple. Two more questions until I go on a break for my prayer and we watch Sir Talha's video on the ATP. Let me check if there is a video on the ATP from Sir Talha. Very great chemistry teacher, and I recommend everybody to go check him out. Yes, as you can see, chemistry ATP class. We will keep this ready because we will chemistry electrolysis lectures are here. Organics lectures are also present here. Um, let's see if there is any other lectures which are possibly here. There is a lot of A2 lectures, so if you're in A2 and you're tuning in for my stream for some reason, you might want to check him out too, because one of the best teachers, let's not waste our time. Let me put this video right here. We will watch this afterwards when I will be eating my lunch and you all will be watching me. Question number 6. A student obtains a pure dry sample of sand and sodium chloride from a mixture of sand and sodium chloride. Sand is, as we know, SiO2 and salt is NaCl, sodium chloride. The student uses the apparatus shows them. आ जाएं? आ गया. Okay, guys, let's go on a break for now. I have my food ready. Go say your prayers, guys. It's really important that you do not forget that you have prayers which you have to pray in your daily life. Eat your food. As you can see, it's already almost sunset. I have to say my prayer. You guys have to say your prayer. We will meet each other at 7, or I will try to make it early. It might get to 7:45 so that we can at least watch his lecture and get our revision done and have a great paper tomorrow. Alhamdulillah and Allah.
Hello. Yeah, bro, my lights are going crazy right now. Like, I don't know what is happening. I mean, I can't see it. If I turn it off, it might work, but nah, let's forget about it. Um, for now, let's check out the ATP. I think let's skip this past paper. It's really simple. Uh, you guys can take some pics if you want, but I can send it to the chat too if you want. You got a comment for it because I'm not gonna send it randomly. Let's just watch his video. Before I start, Sir Tella, please let me watch your video, sir. Please, I look up to you, sir. Please, don't take my video down. Don't do this to me. Thank you. इतने डेटेड लग रहे हैं बेटा सब जरा फ्रेश हो गया बेटा मुंह धो के आए जरा जरा भी उठे Bruh. अल्हम्दुलिल्लाह बेटा आप फ्रेश लगे वहीं सामने बेटा आराम से देन एट 3 o'clock मैं आपसे वर्कशीट शेयर करूंगा जो आपने नेक्स्ट आवर में या 1 hour 30 minutes में आपने सुनेंगे और आप लोग की ऑर्गेनिक जरूर की चलेंगी जिस तरह चल रही होती है ओके ईटीबी अब बेटा यू नो दिस थिंग कि वी हैव 3 पेपर्स इन आईजीसीएसई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में तीन पेपर्स होते हैं फर्स्ट पेपर एमसीक्यू होता है जो जीसीई में जिसे हम 1 2 कहते हैं और आईजीसीएसई में 2 2 कहते हैं और फिर सेकंड पेपर होता है थ्योरी का जो जीसीई में दैट इज 2 2 आईजीसीएसई में 4 2 होता है एंड द थर्ड पेपर होता है दैट इज एटीपी एटीपी होता है 4 2 इन जीसीई एंड 6 2 इन आईजीसीएसई जो भी आपके सामने लिखा हुआ है तो पैटर्न दोनों का सेम है चाहे आप आईजी के हैं जीसी के हैं एक ही बात है परसेंटेज मार्क्स और टाइम सबका सेम ही है बेटा पैटर्न भी सेम ही है क्वेश्चन का स्टाइल भी सेम ही है सब कुछ सेम तो कोई डिफरेंस नहीं है वेदर यू आर अपेयरिंग फ्रॉम आईजीसीएसई और जीसी तो आप प्रैक्टिस करें दोनों से मैं भी आपको दोनों से ही प्रैक्टिस करवाऊंगा क्योंकि एट दी एंड हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए ये नहीं है कि आईजी का तो नहीं करेंगे जीसी का तो ये भी नहीं करेंगे तो एक तो हमें करना पड़ेगा दोनों हमें गलती करने हैं तो वैसे करना होता है बट इसमें एटीपी के अब बेटा कितने मार्क्स हैं आपके सामने लिखे हुए हैं क्या वेटेज होती है ओवरऑल आपके सामने लिखी हुई है क्या टाइम है पेपर का आपके सामने लिखा हुआ है बेटा सो 1 hour का पेपर होता है 40 मार्क्स होते हैं बेटा ओवरऑल टोटल मार्क्स होती है परसेंटेज वेटेज कितनी है 20% थ्योरी की वेटेज ज्यादा होगी 20% 30% एमसीक्यू 20% एटीपी तो ये डिवाइडेड होता है मतलब ये 40 मार्क्स की परसेंटेज ओवरऑल पूरी केमिस्ट्री में कितनी 20% है और बाकी 80% थ्योरी और एमसीक्यूज में अब बेटा क्वेश्चन हमारे पास आते हैं 4 चाहे वो फिजिक्स का एटीपी है चाहे वो केमिस्ट्री का एटीपी है 4 क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास वही 4 होते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूं किससे आते हैं सेकंड किससे आते हैं थर्ड किससे तो 4 क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने होते हैं इन दिस 1 hour 40 मार्क्स होते हैं 20% वेटेज होती है अब बेटा सबसे पहले जरा टॉपिक्स लिख लें वैसे हमने सारा कुछ कवर किया हुआ है सारा कुछ हमने कवर किया हुआ है टॉपिक्स हमने कवर किए हुए हैं जितने भी क्वेश्चन बेटा आप मेरे साथ करेंगे ना यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आप मेरे साथ करेंगे यहाँ पे बेसिकली वो आपके नोट्स का पार्ट होंगे इट्स नॉट लाइक एटीपी के कोई डिफरेंट नोट्स हैं एटीपी के कोई डिफरेंट पास रिक्वायरमेंट्स हैं टॉपिक सेम है नोट सेम है कोई नई चीज आएगी अगर तो मैं आपको यहीं पे मेंशन करवा दूंगा तो जो आज से आप वर्कशीट क्वेश्चन करना शुरू करेंगे बेटा बेसिकली वो आपके एटीपी के नोट्स ही होंगे तो जब आपने रिवाइज भी करना है जब एटीपी का पेपर आने वाला होगा तो आप इन्हीं को ही देखेंगे आपको भी एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है टॉपिक मेंशन कर देता बेटा कौन कौन से टॉपिक जनरली एटीपी का पार्ट होते हैं मतलब 90-95% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आ रहे होते हैं टॉपिक कौन कौन से हैं बेटा फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास जो केमिस्ट्री में जिससे हमारे पास आ रहा होता है क्वेश्चन वो है एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री इज द फर्स्ट टॉपिक एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री द फर्स्ट टॉपिक जिससे हमारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं एक्सपेरिमेंट ऑफ वाटर किलोमीटर्स का करेंगे वो हमारे से होना चाहिए इसमें ये भी हम देखेंगे टॉपिक क्या है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन में आपने 2 एक्सपेरिमेंट पढ़े थे रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के लिए बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर्म्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम and by that process you can measure the rate of reaction. The second one was yes by look rate of reaction. So that and the last thing question आ जाता है कि Yo, यही मैं पता हूं rate of reaction है repeat कर सकते हैं जो पेपर के क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है that is generally Isa, yo, bring over some dudes with you.
क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है मैं आपको एक बेसिक सीक्वेंस बता रहा हूं, जनरल सीक्वेंस बता रहा हूं, इट्स नॉट लाइक इट इज ऑलवेज लाइक दिस, मेजॉरिटी जो आपके पास क्वेश्चंस होते हैं या पेपर्स होते हैं, ये पैटर्न फॉलो होता है। क्वेश्चन नंबर 1 होता है एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री का विद सॉल्ट्स, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री विद सॉल्ट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज ईदर फ्रॉम रेट ऑफ रिएक्शन और फ्रॉम मोल स्टोइचियोमेट्री, इन दोनों में से कोई क्वेश्चन आ रहा होता है, या रेट ऑफ रिएक्शन का आ रहा होता है, रेट ऑफ रिएक्शन और मोल स्टोइचियोमेट्री, इन दोनों में से कोई एक आया हुआ होता है जनरली। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 होता है जो हमने पहले अटेम्प्ट किया है, कौन सा क्वेश्चन के बारे में किया था Guys, my dad's calling me. Hold on, please be. I will be right back.
Sorry about that. Let's continue. Six, 7. Thank you, Isa. Oh, graphs questions. पर मैं जो Sorry, क्वेश्चन sorry, sorry. तो नेक्स्ट जब भी मैं आएगा ग्राफ वाला क्वेश्चन मैं पहले शेयर कर दूंगा ताकि आप प्रिंट करके अपने सामने रखें और मेरे साथ सॉल्व करें पेपर के ऊपर आपको बताओ कैसे प्लॉटिंग करनी है कैसे कर्व ड्रॉ करनी है क्योंकि देखने से समझ तो आ जाती है बेटा बात लेकिन आपको ड्रॉ करना शुरू करने पता चलता है कैसे ग्राफ ड्रॉ नहीं हो रहा ऊपर नीचे हो रहा है पॉइंट सही नहीं आ रहे तो बेहतर ये है कि आप मेरे साथ ड्रॉ करें ओके बेटा अब स्टार्ट करेंगे जो एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दूंगा साथ देखते जाना इट्स नॉट लाइक ए क्वेश्चन है जिसमें मैं हमेशा कहता हूं एमसीक्यूज के साथ उसकी सारी चीजें साथ मेंशन किया करें इस तरह यही आपके नोट्स भी हैं इट्स नॉट लाइक ए क्वेश्चन सॉल्व करके हम जान से पता आंसर लिखिए साथ सारी कहानी लिखें जो चीजें आपको उसके बारे में पता है कुछ चीज नहीं पता होगी साथ मेंशन कर लें ओके लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोजेस व्हेन हीटेड अब आपके माइंड में आएगा सारी कहानी माइंड में आनी चाहिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोजेस व्हेन हीटेड ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं जो हीट की वजह से ब्रेक डाउन हो जाते हैं Thermal इससे ये नॉलेज decomposition. इतना होगा कि हर कहानी पढ़ते हुए सारी चीजें माइंड में आ रही द प्रोडक्ट्स आर सॉलिड्स सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड What is up, Syed Murtaza Shah कार्बन डाइऑक्साइड dot कह रहे हैं आप जब 5? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को देखिए मैं रिएक्शन लिखने लगा मांगा हुआ है नहीं मांगा हुआ मुझे अपना नॉलेज चेक करना है आपको अपना नॉलेज चेक करना है कि आपको चीजें पता है नहीं पता क्योंकि अभी हमको टाइम एक क्वेश्चन आधा घंटा लगे जितना मर्जी टाइम लगे लास्ट में जाके हम देखेंगे टाइम कैसे मैनेज करना अभी तो हम सीख रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हो रहा है हीट की वजह से ब्रेक डाउन होकर क्या बना रहा है कह रहे हैं सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो ये बेटा हमारे पास कोई रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्मूला मेकिंग हमें आती है रिएक्शन इज ऑलरेडी देयर Yes. कह रहा है स्टूडेंट डिकम्पोज अ सैंपल ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूजिंग द ऑपरेटर्स शोन A student decomposed a sample of sodium hydrogen carbonate using the operators shown. Name the items of operators labeled A and B. Name the items of operators labeled A and B. अब नजर आ रहा है डायग्राम दी हुई है डायग्राम में कोई गैस कलेक्ट हो रही है थ्रू अ मेथड कॉल्ड Water displacement. this Displacement of method is water. called displacement of water अगर आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री का आइडिया हो वहां पे हमने 3 मेथड पढ़े थे गैसेस को कलेक्ट करने के लिए अपवर्ड डिलीवरी डाउनवर्ड डिलीवरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर अपवर्ड डिलीवरी उन गैसेस के लिए हम यूज करते हैं द गैसेस व्हिच आर लेस dense and soluble in water that's why we are not using water downward delivery is used for those gases which are more dense than air and soluble in water and this method is used for those gases which are less dense and insoluble क्योंकि ये सबसे बेस्ट मेथड है गैसेस कलेक्ट करने का और ये इससे वो वाली गैसेस भी सेपरेट हो जाती हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं तो आपके पास वही वाली गैस आएगी जो इनसॉल्युबल होगी जो आप कलेक्ट करना चाह रहे हैं True. ओके अब बेटा ये A क्या है वो कह रहा है लेबल करें ये B क्या है वो कह रहा है लेबल करें अब क्या है नेम द आइटम्स ऑफ ऑपरेटर्स लेबल्ड A एंड B जी ए क्या है किसी को आइडिया क्या नेम देंगे जो आपके पास थोड़ा बहुत Test नॉलेज है tube. उससे बता Test सकते हैं क्या tube. कहेंगे Test आप tube. इसे यस दोज हु आर ऑनलाइन क्या कह Test सकते हैं tube. इसे अब बेटा कोशिश करना है जितना आप एक्यूरेट आंसर करें उतना बेहतर है आयशा बेटा मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ जितना एक्यूरेट आंसर करेंगे बेटा उतना बेहतर है कुछ लोग सिर्फ ट्यूब कह रहे होते हैं यस कुछ मार्किंग स्कीम में ट्यूब भी लिखा होता है लेकिन इसका बेस्ट आंसर जो है दैट विल बी टेस्ट ट्यूब ये छोटी वाली ट्यूब होती है टेस्ट ट्यूब होती है इसका चीजों को हीट अप कर रहे होते हैं तो इसे आप लिखेंगे बेटा दिस You're ए either इज टेस्ट ट्यूब me अब किसी को अगर नॉलेज नहीं है तो or you're not perfect. अब आपका नॉलेज आपने गेन कर लिया तो दिस ए इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब अब किसी को नहीं पता था अभी अपने पास लिख लें या फिर नोट का पार्ट बन गया दिस थिंग इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बी क्या लेबल हुआ ये क्या ये जो सिलेंडर सा है सिलेंडर को हम क्या कहते हैं ये तो हमें पता है दिस इज कॉल्ड मेजरिंग सिलेंडर अपसाइड डाउन प्लेस है मेजरिंग सिलेंडर कहते हैं इसे हम मेजरिंग सिलेंडर कहते हैं तो ये भी आप लिख देंगे मेजरिंग सिलेंडर अब इसके अलावा जब आप कहते हैं तो ये भी आप लिख देंगे मेजरिंग सिलेंडर
अब इसके अलावा जब आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इसके अलावा जो चीजें बेटा आपको नजर आ रही हैं वो भी आपने माइंड में लें, ये क्या क्या, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये डायग्राम देके कोई और चीज आपसे लेबल करवा सकते हैं। जैसे उसने लेबल की हुई है, हम क्या कहते हैं डिलीवरी ट्यूब, तो ये भी अपना नॉलेज में आप लिख लें कि हाँ ये डिलीवरी ट्यूब होती है जो गैस को डिलीवर करती है फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब इनटू द मेजरिंग सिलेंडर, दिस इज कॉल्ड डिलीवरी ट्यूब। और ये जो बेटा जिससे आपने क्लोज किया हुआ होता है अपनी ट्यूब को, इसे हम रबर बंग कहते हैं, तो ये बंग है आपके पास। तो रबर Light बंग just वैसे went कॉर्ड भी कह रहे out. होते हैं, लेकिन जनरली जो हमारी मार्केट में जो वर्डिंग यूज होती है वो रबर बंग की है, तो रबर बंग आप यूज कर रहे होते हैं। और आपको साथ ही माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि हमने एक जगह पे कॉटन वूल भी यूज की थी रबर बंग की जगह पे, तो उसका क्या पर्पस होता है कॉटन वूल का। हम चाहते हैं जब हम कॉटन वूल यूज करते हैं तो हम चाहते हैं गैसेस आपके सिलेंडर से बाहर निकल जाए, फिर कॉटन वूल यूज करने का पर्पस ओपन रहने दें, तो उसका आंसर ये करना है फिजिंग की वजह से कोई हार्मफुल मटेरियल बाहर आ सकता है जो आपको हार्म कर सकता है, जो आपके लिए डैमेजिंग है। तो इससे बचने के लिए बेटा कॉटन वूल लगा देते हैं ताकि जब रिएक्शन हो रहा है, फिजिंग हो रही है, तो पार्टिकल्स बाहर ना आए, आपके हाथ पे ना गिरे, या जिस पे आप जिस जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट उससे डैमेज ना करे। तो ये बेटा आपको माइंड में रखना। यस अभी बेटा। No, I will never तो ये सभी accept चीजें your बेटा साथ साथ color आपने लिखते request. जाना है। अब बेटा क्या कह रहा है नेक्स्ट पार्ट में, when the sodium hydrogen carbonate was heated, a colorless liquid collected at the point marked X. Colorless liquid is connected at the point marked X, suggest the identity of the colorless liquid. Colorless liquid बेटा हमारे You पास कौन wanna सा है, suggest stalk the me? identity of the colorless liquid। अब बेटा ये लिक्विड कौन सा होगा, अब आपने ऊपर रिएक्शन देख के लिखा हुआ है, तो आपको पता है जब ये आप हीट अप करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, लिक्विड एक ही बनना है, सोडियम कार्बोनेट विल बी अ सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी अ गैस, वाटर विल बी योर लिक्विड। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वाटर ही होगा, सिंपल सी बात है, वाटर है आपके पास, H2O है। अब जब आपने रिएक्शन ऊपर ये सही क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा ना, तो आपको फिर ये समझ नहीं आएगा कि मुझे क्या पता कौन सा लिक्विड आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ उसने वाटर आ रहा है, तो सिर्फ देख के नीचे लिखना आपने, बस वो पूछ रहा है कि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आपने, वाटर विल बी योर लिक्विड। ओके आगे चले बेटा, सी पार्ट में कह रहे हैं ऑन द डायग्राम ड्रॉ वन एरो टू शो वेयर द ऑपरेटर शुड बी हीटेड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। So on the diagram, draw an arrow to show where the operator should be heated during the experiment. कहाँ पे हीट You करना है? guys, if you अब see any बेसिकली आप ghost हीट behind किस me, चीज do को tell कर me. रहे हैं? हीट हम कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। तो बेटा हीट भी आपने उधर से ही करना है जहां पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको कही मैंने सर यहाँ से हीट करना है, क्या करेंगे हीट करके, यहाँ से या यहाँ से हीट करना है या यहाँ से हीट की, दिस इज योर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो आपको यहाँ पे बेटा, और कैसे लगाएंगे, आपने एरो लगाना है, इस तरह एरो लगाएं और नीचे लिखे हीट। तो I'm जरा a little अच्छा obsessed, सा I साफ सा करके admit बेटा it. काम करना। You're a little obsessed. तो हीट यहाँ पे करेंगे बिकॉज यू नीड टू ब्रेक डाउन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विद द हेल्प ऑफ हीट, एंड देन यू विल गेट सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड Correct. बिलो द टेस्ट ट्यूब। यस बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब डी पार्ट में कह रहा है स्टेट एन ऑब्जर्वेशन दैट वुड इंडिकेट दैट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैड स्टॉप्ड हीटिंग, स्टॉप रिएक्टिंग। स्टेट एन ऑब्जर्वेशन। अब बेटा वो कह रहा है कैसे आपको पता चलेगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ने रिएक्ट करना या ब्रेक डाउन होना छोड़ दिया। आपको नजर क्या चीज आ रही है जिससे आपको आइडिया होगा, हाँ आप तो रुक So गया, मैं chat, अपना should we do निकाल a सकता हूँ, past सब कुछ paper एनालाइज कर after सकता हूँ। बिल्कुल this? सही कह रहे हैं कुछ लोग जी। Yes, no more bubbling, no more fizzing. अगर क्योंकि you have a carbon dioxide gas and you can clearly see there are some bubbles of carbon dioxide gas in water. जब ये रिएक्शन रुकेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना रुक जाएगी, बबल्स आना रुक जाएंगे, नजर नहीं आएंगे बबल्स। तो आप लिखेंगे no more bubbling, no more fizzing. Effervescence stops, yes बिल्कुल सही है, no more gas, yes। तो गैस का पता चलने के लिए बेटा बबलिंग फिजिंग effervescence मेंशन करना जरूरी होता है। So no more fizzing, no more bubbling, 1 mark is enough. This will be your observation for this reaction। 2 mark होता है फिर कोई और ऑब्जर्वेशन भी होती है वो मेंशन कर सकते थे। आपने ये नहीं लिखना। आप कुछ लोग मेंशन कर रहे हैं no more carbon dioxide gas, नहीं हमें तो गैस को मेंशन नहीं करना, हमें जो नजर आ रहा है हमें वो मेंशन करना। हमें नजर आ रहे बबल्स, हमें फिजिंग होती हुई नजर आ रही है, तो हमने उसे Correct. मेंशन करना। ऑब्जर्वेशन का मतलब बेटा ये होता है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी नजर आ रहा है लिखा हुआ CO2, वो तो नहीं नजर आ रहा, बबल नजर आ रहे हैं, तो यू राइट बबल्स या यू पूरा लिखिए बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल फेज, या फिजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फिजिंग बबलिंग का वर्ड मेंशन करना बेटा। नहीं नोमान बेटा, मे भी आपके पास सोडियम कार्बोनेट पीछे रह गया हो तो वो नहीं बता सकते। तो ये वो कह रहे हैं कि हम ये ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गायब हो गया। ये ऑब्जर्वेशन से ज्यादा फिजिबल नहीं है क्योंकि यू हैव सोडियम कार्बोनेट एज वेल, तो मे बी दैट सॉलिड इज अ सॉलिड ऑफ सोडियम कार्बोनेट, वो आप क्लियरली नहीं बता सकेंगे। तो इस वजह से बचने के लिए ज्यादा बेटर यही काम है कि आप ये ऐसा आंसर लिखें जो बिल्कुल क्लियर है हम। तो 1 मार्क के लिए इट्स एनफ। ई पार्ट बेटा कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमूव द डिलीवरी ट्यूब फ्रॉम द वाटर एज सून एज हीटिंग इज I'm स्टॉप्ड। up. अब वो कह रहा है कि आपने व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट Be टू रिमूव द right डिलीवरी ट्यूब back. फ्रॉम द You वाटर एज सून guys एज हीटिंग इज स्टॉप्ड। can't watch अब कह this रहा है जो because डिलीवरी, otherwise I might get demonetized for showing content without permission. I'm up. You guys just stay here. Oh my god, bro. What is this scary type environment? Ooh. I might actually attach a light to this. Let's see my camera. Attach a light to it so we don't get these beautiful frames anymore. Yeah, I mean that's better. Yeah, that is so much better. I'm gonna be right back. I'm gonna put the mic. Don't leave me alone, bro. I'm gonna be right with you. I'm gonna be right with you.
Bear with me, guys. Oh my god, I'm wearing my mic upside down. Did you get scared? I bet you did. Go wash your pants, you beat them. One viewer. Crazy. लेकिन रुक गई है तो आप डिलीवरी को निकालना क्यों निकालेंगे जरा सोच के बताएं कि जब आपका रिएक्शन क्या है एक्सप्लेन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमूव द डिलीवरी ट्यूब फ्रॉम द वाटर एज सून एज हीटिंग स्टॉप जब आपने हीट करना रोक दिया साथ में डिलीवरी भी निकाल लेंगे ऐसा क्यों गुड मॉर्निंग बेटा यस ओके आपका जो वाटर हीटेड है उसकी स्टीम ना निकले यस एनीवन एल्स बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा गुड राहिम बेटा फर्दर डिकम्पोज ना करें लेकिन नहीं ऐसे नहीं कह सकते हम नहीं यस दो आंसर बेटा मेंशन ओके आपका जो वाटर हीटेड है उसकी स्टीम ना निकले ऐसा वाटर व्हाई क्यों निकाल कह रहा है delivery tube from the water as soon as heating is stopped ने as क्या कह रहा है explain why it is important to remove the delivery tube from the water as soon as heating is stopped अब वो कह रहा है कि आपने why it is important to remove the delivery tube from the water as soon as heating is stopped कह रहा है जो हीटिंग रुक गई है तो आप delivery tube को निकालना क्यों निकालेंगे जरा सोच के बताएं कि जब आपका रिएक्शन क्या कह रहा है explain why it is important to remove the delivery tube from the water as soon as heating is stopped जब आपने हीट करना रोक दिया साथ में delivery भी निकाल लेंगे ऐसा क्यों गुड मॉर्निंग बेटा यस ओके आपका जो वाटर हीटेड है उसकी स्टीम ना निकले यस एनीवन एल्स बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा गुड राहिम बेटा फर्दर डिकम्पोज ना करें लेकिन नहीं ऐसे नहीं कह सकते हम नहीं यस दो आंसर बेटा मेंशन किए जा सकते हैं बेटर आंसर ये है जब हीटेड होती है ट्यूब तो वाटर क्या करता है अगर आप हीट रिमूव करते हैं साथ डिलीवरी ट्यूब रिमूव करनी पड़ती है अदरवाइज ये जो वाटर है ना बेटा ये यहाँ से वापस फ्लो बैक करना शुरू कर देता बिकॉज ऑफ इट्स लो डेंसिटी बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस वाटर विल स्टार्ट मूविंग बैक इनटू द टेस्ट ट्यूब सो टू प्रिवेंट दैट बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए साथ ही आप टेस्ट ट्यूब निकाल देते हैं बिकॉज अदरवाइज फिर सारा आपके टेस्ट ट्यूब में चला जाएगा सोडियम कार्बोनेट है जो भी चीज आपके पास आई हुई है जो वाटर आया हुआ है वो सारा आपके पास मिक्स होना शुरू हो जाएगा तो वो कह रहा है व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिमूव द डिलीवरी ट्यूब फ्रॉम द Bro, वाटर watching me instead of preparing for your exam is the same as preparing for your exam. एक तो ये बात विशाल 2 मार्क्स में मिल जाएंगे आपको तो आप देखेंगे वाटर विल स्टार्ट मूविंग बैक बेसिकली बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वाटर वापस आना शुरू हो जाता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से तो वाटर विल स्टार्ट मूविंग बैक इनटू द टेस्ट ट्यूब वाटर विल स्टार्ट मूविंग बैक into the test tube water will start moving back into the test tube to prevent that you have to remove the delivery tube so back flow को prevent करने के लिए otherwise water will start to flow back into the test tube या दूसरा बात ये mention कर सकते हैं मेन पॉइंट ये दूसरी बात कर सकते हैं कि जब Alright guys, I'm bored. I don't wanna watch this video. I'm pretty sure you guys don't wanna watch it. If you guys wanna watch this yourself, I'm gonna place the link in the chat. You watch it yourself if you want to. I'm gonna close this and I'm gonna do something else instead. Let's see. Games online. Free online games. Yes. Okay, these buns. This is gonna be fun. Let me see if my keyboard is working. Maybe if I attach this. Oh right, light's gone, I forgot. I have to play like this. Can you touch the boundaries? Oh, you can't. That makes it harder. Oh, that was close. Okay, we got this, but this game is easy. This game is easy. Easy. What am I talking about, bro? Bruh, I'm baiting the snake. Okay.
I killed myself with that one. Let's play. Tic-tac-toe. I'm looking kind of good at tic-tac-toe. He said, okay. Try solving the puzzle below. What the hell is this game? Oh, that makes sense. Ooh, kind of hard. Oh my god, I exactly banned at this. We're not playing this game. Kids, W. Okay, this looks like a sketchy website. Where are the guns one? Online. No, not online. Game. Okay, I can't type. Games for 2 players. Because I think that's where I find some W game. Yeah, I've been to this one before. Where's the game at? Gun one, Gun Mayhem or something. Steel Brainerd, really? Let me search up Gun. Gun Mayhem. This game is actually peak, bro. Trust. I'm gonna show you guys how good I am. Loud as hell. Is it loud for you guys? I'm gonna lower the desktop just in case. How do you shoot? Okay, bro, this guy's actually kind of trash. He just got an extra life. This guy is the easy AI. Oh yeah, the shotgun. Bro, he's getting everything. Don't tell me. Yeah. He's on his last life. Oh, he's dead. Oh. Sniped him out. 2 times the easy AI.
Lock in, lock in. हाँ जी हाँ लगवाएं. Well, guys, I'm gonna look call it wraps for now. I had fun today. Well, let's blind me. Whoa. So, no words, Loki. This was a fun stream. I was studying. That's kind of weird. I'm pretty much prepared for the. I'm pretty much prepared for the ATP, and I'm pretty sure all of you are prepared now too. Well, take care. Allah Hafiz. It has been Hashim here, and hold on, I just have to do one thing before I leave. You know how I'm always saying a certain frame using a certain somebody most of the time? Well, my dear fellows, you're either me or you're not perfect.